bro. Hi, do you remember me? Yeah, Vansh, obviously. Yeah, hi, Yash. You look good, yeah. Oh, thank you, bro. Bro, you've You look changed a lot. nice. How are you doing? I'm doing good. How are you? Yeah, I'm doing good. Yeah, what are you doing nowadays? Nothing, just studying, you know. Yeah, what are you studying, bro? I'm studying BMS. Oh, Yeah. okay, that's great, yeah. Yeah. So, what are you doing here? Where are you headed? I'm just, waiting for my friend. Oh, okay. I'm going somewhere. Where are you going? On the 3rd floor. Okay. You? Wait, I'm also going on the 3rd floor. Are you here for a Evening. podcast? Open-ended. Yeah. Okay, Oh, you shit. Where are Wait, you going? bro, I'm the host. Oh, shit. Yeah, come with me, bro. I'll take you to open-ended. Let's go. Oh, no. So, hey guys, welcome back to The open-ended. podcast. Today, here we are joined with our special guest, Hi, guys. I'm Yash Acharya. and I'm Vansh Iyer. And this is Gautami Apte. And today, please introduce yourself, Yashacharya. So, as I said, my name is Yash Acharya. I'm currently 20 years old and I'm studying BMS. And my only love interest in my life right now would probably be Manchester United. I think Thank the you. right now is very important. Yeah, Yes. right Yes. now. Hopeful. Right hopeful. now. Yeah. So, Yashacharya, how are you today? Must enjoying only. Yeah, enjoying only. Enjoy only. Yeah, I see you are playing a very shy guy today, yeah? Yeah, unfortunately तूने ही मेरे को ये सब करवाने लगा दिया ठीक है यार. So, Making it seem like we forced him and shit. Yeah. ऐसा नहीं है. अभी थोड़ा हाँ, वो शाय गाय के वो कुछ उनको भी पता कोई भी नहीं गाय है. बना दे तू मेरे को. वो सब रिवील नहीं करना है अभी. Hmm. Hmm? Okay. So, Abhi, since we're on the topic of shy, today's topic is why is it difficult or what, like the fear of talking to strangers. So, would you like to add something on your fear that you might have ever experienced with talking to strangers? See, honestly speaking, nowadays, like people, like they tell me कि I'm a very outgoing person. I'm very extrovert and all that. But पहले एक time था when even I was scared of talking to other people and in general going up to someone, be it a boy or a girl. And but the thing is कि वो थोड़ा overcome करने के लिए you need to trust yourself. You need to be more confident in yourself. Self confidence is key in my opinion. This is the only thing that I'll say. Self confidence is key. But Definitely. self confidence also, matlab, that only comes matlab, based on तेरे personal experiences, right? Matlab, I don't think everyone has self confidence. See, I feel like everyone is special. Not special needs wala special, but अपने में ही special. You need to find that speciality inside of you. Yeah. It's not easy to ऐसा इतना easy नहीं है कि भाई एक दिन उठ गया ढूंढ लिया मेरे अंदर है ये speciality, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये अच्छा चीज़ है. It takes time. अगर तुम किसी के पास जा रहे हो एंड पहले तुमको बहुत शाय लगेगा, बट एज तुम लोग और जाते रहोगे और बार जाते रहोगे वो धीरे धीरे चले जाता है. But other than shy as well, I mean, I personally, I have a huge fear of talking to people. ठीक है? So, but मेरा ना, I have really irrational fears. Okay, like when I have issues, right, talking to newer people, I just think about कि मैं उनको अगर जाके approach किया, तो will I seem like a creep? Am I a weirdo? मैं अगर कुछ बोले तो what if they don't say hi back to me? What if they just ignore and walk away from me? These very stupid से डर ऐसा अंदर रहता है, which aren't really like don't really make sense. ऐसा कोई है, like all I'm doing is trying to introduce myself to maybe a friend, right? Yeah. Or maybe someone that I met after a really long time, like a friend, right? So, or someone I used to know in school maybe, right?
तो उनको लाइक अगर लेट्स से बहुत सालों बाद पहली बार मिल रहा हो, राइट, पता नहीं, बट वो बहुत डर सा रहता है अंदर की, अगर मैं जाके कुछ भी बोलूँ तो वो कैसे बिहेव करेंगे, एंड आई डोंट नो हाउ टू ओवरकम इट, राइट. एंड लाइक I think it roots back to my childhood at least. Yeah. But and I don't want to really get into that a lot. But I think also most of these irrational fears, right, about talking and communication, I think really does date back or root back to everyone's upbringing and how they were treated maybe as kids with their Yeah. Fair friends. enough. It is highly dependent on your experiences. It is possible कि we have seen many outgoing children. Yeah. उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है. They'll just go and say anything to anyone. But they are 4 years old. No one cares what they are doing. But the responses that they get from these people that they're talking to, उससे तो मैटर करता है how they will behave, because that is how learning is in general. That's just the way of life, right? तो एक तो वो है जो हमारे experiences है, the responses that we get from other people when we do try to do. And the second part that slowly builds up as we start growing up is our self esteem and how we perceive ourselves. कि अगर मुझे लगता है that I would be able to. Now a good example of that is that I know that I'm so confident. I know that I just know that I'm so cool that if I go and talk to someone out there, then they will respond to me. And maybe let's say that the 4 out of 5 times that works. 4 out of 5 times they do respond to me in a good way. But then that fifth time where they don't respond to me properly or as I had expected, तो फिर मेरा confidence level इधर से जो इधर गिरेगा, that I will have to go through like an entire cycle again just so I can approach someone else. I feel like Hmm. 10 में से एक तो चूतिया होता ही है. So जैसे ठीक तूने है. बोला कि मेरे को डर था कि व्हाट इफ लाइक दे डोंट रिस्पॉन्ड और वो हाँ. ऐसे ही होता है. 10 में से कोई एक रहेगा ही कि उनमें लाइक बहुत सारे लोग को लगता है कि आई एम वेरी कूल टू बी टॉकिंग टू सम Yeah. रैंडम किड कभी वो इन माय external स्कूल. factors होता यस है फॉर फिर. एग्जांपल स्कूल में नया बच्चा आया तो आई विल बी लाइक कि नहीं भाई मैं नए बच्चे से क्यों बात करूं, वो बेचारा आके बात कर रहा है. थोड़े बहुत लोग होते हैं वैसे ही. Ego issues. नहीं, लाइक या सो लाइक द अभी लाइक मे बी 6 साल पहले ही शिफ्टेड टू अ न्यू सोसाइटी, राइट. गांड फट गई थी पहली बार नीचे उतरा तो, बिकॉज इट रियली फेल्ट लाइक मैं अनजान देश में आ गया हूँ बिकॉज मैं वो एक कंफर्ट जोन में था जहाँ पे मैं रहता था. एवरीवन इन माय सराउंडिंग्स न्यू मी, फ्रॉम द शॉपकीपर्स टू बिल्डिंग पीपल टू फ्रेंड्स फ्रॉम द ऑपोजिट सोसाइटी इटसेल्फ, राइट. Bus, school buses, everyone, I knew everything, everything was it was a constant, vada pav wala, bhaji wala, everyone knew कि मैं इधर का ही रहने वाला हूँ, and हाँ. they all knew my nickname as well. मैं बचपन से उनके साथ खेलता था, बड़ा हुआ उनके साथ, right. And then suddenly when you're in this new neighborhood, तो एकदम weird लगने लगा. And पहले तो मेरे को मेरी फट गई थी to talk to any new friend or a person here. तो मैंने अभी बस गया, आई जस्ट टॉक टू दिस किड, सोसाइटी में खेले थे कोई विंग में, एंड आई आस्क्ड देम गाइस कैन आई प्ले विद यू ऑल. पहले तो आई मेरे में हिम्मत नहीं होती, थोड़ी कर दी मैंने, चल अभी जाके एक बार बात करके देख लेता हूँ. तो बोलते कि सॉरी ब्रो जगह नहीं है. नो व्हाट द फक डज जगह नहीं है मीन, लाइक. एंड तभी इट आई फेल्ट ओके, मैंने बोल के निकल गया बिकॉज आई डिडंट नो व्हाट टू से, राइट. मेरे को पता नहीं था मैं क्या बोलूँ. आई फेल्ट रियली बैड, राइट. अभी बट ठीक है, पहले मेरे को समझा नहीं कि मैं बोलूँ क्या. सॉरी क्या बोलूँ, कुछ मेरे को समझा नहीं. बट Why does it feel like he would be one of those people to say sorry No for यार, जगह इतना नहीं है? गंदा नहीं हूँ मैं, थोड़ा गंदा हूँ, इतना गंदा नहीं हूँ लेकिन मैं यार. सॉरी कंटिन्यू. नहीं, बट या वही. सो आई डोंट नो, बच्चों में भी वो थोड़ा. एंड द फनी थिंग इज लेटर लाइक 8th grade में आई स्टार्टेड मैथ ट्यूशंस बिकॉज मैं 2 बार फेल. ये अभी मेरे को फर्स्ट टाइम पता चल रहा है गाइस. एंड तो मैथ ट्यूशन में जो बच्चा था वहाँ पे, वांटी का, ही वॉज द लीडर ऑफ दैट सेम गैंग, ठीक है. तो मैं उसके साथ रॉकेट लीग खेलने लग गया. एंड ही सेड अरे तू तो बड़ा कूल है, ठीक है, यू आर लाइक अ कूल गाय. सो आई स्टार्टेड प्लेइंग विद देम. एंड एज सून एज हमारा बीफ हो गया रॉकेट लीग में, ही सेड नहीं तू कूल नहीं है. एंड दे स्टॉप प्लेइंग विद मी अगेन. And it was ये like जो so बच्चों वाले childish. clans रहते हैं ना. Bro, but the thing Tokyo is, Manji. no, but the thing is, I became friends with him 3 years after I shifted. So it took me 3 years to actually become his friend in the first place. 3 or 2 years maybe. वो भी रॉकेट लीग की वजह से. Yeah, and वो भी 1 साल के अंदर खत्म हो गया. But then I found later new and better friends.
So that was a good thing. फिर there was a whole phase where everyone just knew me, and now there's a phase where everyone just knows me but isn't my you know. See, I feel like Yeah, life में at least एक बार तो सब everyone should go through this. yeah, See, definitely. as you said कि भाई Definitely, it मैं was a इधर very से different experience. पुरानी Yeah, yeah. बिल्डिंग से नए बिल्डिंग में गया, उधर कोई था नहीं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बचपन से फॉर एग्जांपल मैं 15 साल एक ही बिल्डिंग में रह रहा हूँ या एक ही कंट्री में रह रहा हूँ, एंड इफ आई शिफ्ट टू अनदर कंट्री और डिफरेंट प्लेस, ये ऑब्वियसली उधर जाऊंगा तो मुझे लोग जानते नहीं रहेंगे, थोड़ा ऑकवर्ड रहेगा, वियर्ड रहेगा, बट दिस इज समथिंग दैट एवरीवन शुड एक्सपीरियंस एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ. बिकॉज Definitely. तुमको पता चलेगा ना कि भाई मेरे को कैसे रिएक्ट करना है चीज़ों पे. फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी से बात करने जा रहा हूँ, वो अगर बात नहीं करेगा, मेरे को पता चल जाएगा कि भाई चल फर्स्ट टाइम मिला तो उसके लिए भी ऑकवर्ड रहेगा ही. तुम लोग रिजेक्शन कैसे हैंडल करते हो उसमें बहुत मैटर करता है ना. Yeah. I In mean, every- I don't wanna go Sorry, I through don't have any my. experience with that. You know, I do. Rejection in anything. Well, yeah, I think I've been Any rejected quite a This is like I've few not times. still not no experience in getting rejected. I have I have a very experience. Still good stands. amount. Yeah. I think the only time where I felt like such a huge change in my life was college जब ये मैंने start किया. Everyone I knew in school में actually I never had ऐसा proper friend group. I was like that kid जो सबके साथ दोस्ती, but I never had like okay I will only hang out with these people. You see me hanging out with everyone. Yeah, And yeah. then in 7th standard we were going to trip to Goa. अभी तो solid friends लगेगा. रूम किसके साथ शेयर करूँ भाई. 7th में गोवा लेके जा रहे हैं स्कूल हाँ में. मेरी क्रेजी अच्छी स्कूल थी. वाह यार, Yeah, good memories there. हम तो Yeah. टिक्कू जीनीवाड़ी के आगे लेके नहीं गए आज तक भाई. Silent Hill Resort. अबे Silent Hill Resort का ओनर मेरी बिल्डिंग में रहता था. क्या फायदा, अभी मैं उधर जाने भी नहीं वाला वापस भाई. एसएल वर्ल्ड चले जाऊं, ऐसा वो बंद हो गया. इमेजिका चले जाऊं. अभी वो भी बंद हो जाएगा जॉय soon. जो भी है वेटन वर्ल्ड. Wet and Wet n World. क्या bro? Wet n World. नहीं तो अभी देन आई स्टार्टेड गोइंग. ऐसा एक फ्रेंड ग्रुप था. आई न्यू 2 to 3 पीपल इन देयर. 2 लोग मेरे दोस्त थे, 2 लोग थोड़े मेरे को बिची लगते थे. 7th स्टैंडर्ड बिची पीपल. एंड आई वाज लाइक अभी तो इनके साथ दोस्ती कर. वो सब स्पोर्ट्स टीम के थे. आई वाज नॉट अ स्पोर्ट्स टीम पर्सन. आई वाज कूल बट आई वाज नॉट स्पोर्ट्स टीम पर्सन. सो आई वाज लाइक शिट. देन स्टार्टेड माय 2-month long जर्नी, प्लानिंग जर्नी. थोड़ा सा स्पोर्ट्स में जाऊंगी, इनके साथ दोस्त बनाऊंगी, इनके साथ मैं ये करूंगी. एंड देन आई जस्ट केप्ट गेटिंग रिजेक्टेड लाइक टाइम ऑन टाइम कि लाइक नहीं एक्चुअली हम लोग ऐसा है, हम लोग का वैसा है. एंड आई एम लाइक ओह ओके नो प्रॉब्लम. एंड देन दे किक्ड आउट वन ऑफ लाइक देयर ग्रुप टीम पीपल फॉर सम फक-ass रीजन. सो आई वाज लाइक यस जगह मेरे लिए. I actually felt bad because that friend was like a friend of mine. But I was like मेरे लिए अभी जगह बन गई. And in the end जब भी गोवा में हम लोग actually गए, जब भी रूम का टाइम गया, they are like कि no sorry we are full. And they got that other girl in anyways. And I had to beg for people कि like you wanna share room together, like trying to find like वो गिने चुने अच्छे लोग. And that was just like a horrible experience overall because imagine you're going to Goa 7th standard में school के साथ no parents and then you don't even have your friends with you. You're just fucking there. That was a horrible experience for me. But I think from my experience at least, which I told so far, अभी I've started to be more talkative, you know, with people. We अभी know. धीरे धीरे करके like yeah podcast open ended. Follow guys, follow. But नहीं but like really अभी थोड़ा और I've been able to more openly talk to people. अभी वो उतना डर नहीं रहता, you know, like I don't think now. डर तो है but वो सोचने वाला नहीं है अभी. It's just like वो बस मैं थोड़ा shy हूँ, you know, I'm just a little quiet. But एक बार किसी से पहचान हो जाता है then I'm comfortable talking. You know, like it's like just meeting them 2-3 times, then धीरे धीरे I peel away, you know, that Layer of onion. yeah layer of onion and that closed personality and you know like really be myself then. Yeah. But So you're like yeah, a proper introvert. I'm not an introvert. No, He literally just said that he was an Yeah. introvert. no, but I'm not introverted. You're like an outgoing introvert. No, I'm not an You're introvert. like a social introvert. No, I mean, इंट्रोवर्ट था लेकिन ना. no. तो ये तो ये इसने क्या, तो बोला अपनी खुद statement बोला है. Okay, इसलिए okay. वो What I introvert है. mean is, I don't enjoy being alone. Okay, like Okay. introverts do. No, that's not the only thing. Yeah, introverts enjoy being alone. No. No, introverts don't, they can't approach people like अभी ऐसा public Not, ऐसा but they हरकत also no, नहीं but करते that's लोग. also a part of being an introvert. You don't enjoy being around a lot of people.
I enjoy being around a lot of So people. you're a social introvert because you don't like talking to people I सामने do से. like talking to people. सामने से I am तू तेरा पहले scared बता. तू एक to. काम कर, Okay. 2 मिनट बाजू में जा. No, no, अरे Time नहीं. out. What I mean is, conversation. मुझे Extroverts are talking, sorry. I mean is कि मुझे डर लगता है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे डर लगता है. अच्छा. डर is not the same as पसंद नहीं है. Of course I love talking to people. अगर मेरे को अगर वो डर निकल जाए तो मैं बड़बड़ करूँ पूरा दिन. Okay, तुम्हें We know. सो करना पड़ेगा मेरा मुंह बंद. We You know. know? No, you don't. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाइक कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेरे को लगता है कि बचपन में ना बहुत सब बच्चे, लाइक इवन मी इंक्लूडिंग मी, वी ट्राई टू फिट इन. Yeah. एवरीवन ट्राइज टू फिट इन, बट आई फील लाइक, एंड तभी अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि यू जैसे हमने अभी डिस्कस कर रहे थे, अप्रोच करते तो लाइक वो लोग भगा देते हैं या इंक्लूड नहीं करते. बट आई फील लाइक दोज आर द सेम टाइप ऑफ पीपल जो आगे जाके दे गेट मोर मैच्योर. एंड लाइक अभी ना इतना नहीं लोग, तुम इतने लोगों को मिलोगे नहीं जो जिसको तुम अप्रोच कर रहे हो तुमको भगा देंगे. वो तुम्हारे पीठ पीछे बात कर रहेंगे बट तुमको सामने से वेलकम ही करेंगे वो लोग. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई स्टार्ट माई इंटर्नशिप रिसेंटली. उधर भी लाइक एवरीवन ओपन मी लाइक वेलकम मी विद ओपन आर्म्स. ओके, एंड तभी मेरे को भी लगा था चलो अच्छा है, सब लोग अच्छे से बात कर रहे हैं. तो बाद में पता चल रहा है मेरी ही बिचिंग हो रही है 2 दिन बाद ही, 2 दिन में इसी तरह चालू हो गया था ये. तो होता है, ऐसे लोग होते हैं. बट द थिंग इज कि एज आई सेड, बचपन में सब लोग को थोड़ा एक चर्बी तो रहता ही है. मेरे में भी था. वंश को पता रहेगा, वंश को पता है बहुत अच्छे से. बट या I mean, इन अ yeah. गुड वे, इन अ गुड वे पता है, मतलब अच्छा Ah, in a memories- good way. Yeah, बहुत memories हैं definitely in a थोड़ा good way. टी पता है. स्पिल करो, हम लोग को भी बताओ. Oh no. Please, India please, wants to know. नहीं. please India, go on. India does not want to know. I hope. Please, निकुंज India. wants to know. युकुंज योजी. Oh my god. Okay, buddy, name dropping people now. युकुंज योजी, उसको पता भी नहीं रहेगा युकुंज योजी कौन है. एनीवेज, कट कर लेंगे. Uh, No, but like वो it makes sense because अगर तुम्हें ever since you were a child, these so-called cool people, they are given everything. तो फिर they never have like a learning curve. The people जिनको rejection, they have to face rejection, they have to face situations जिधर उनको इंक्लूड नहीं किया, उनको ये नहीं किया, उनको वो नहीं किया, उनको ऐसा बहुत इधर इधर ऐसा ऐसा करके जाना पड़ता है. सो दे हैव लाइक अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू गेट व्हाट दे वांट, but because they know how to go through the situations, not just because कि oh दे दो and उनको मिल गया. There are a lot of people like that also. वो बाद में जाके they are not going to, they will not survive corporate. Going through corporate, they will not be able to survive corporate. I survived corporate for a मेरे से month. नहीं होगा भाई. I survived corporate for 6 months and might do One it again, bro. 1 week. That's how I you quit. get 3 people. 1 week, 1 month, 6 6 months. months. Wow. And I 6 quit. months and 20 days. That is अच्छा है very भाई, तो भी impressive. अच्छा Yeah, है. yeah, that is very good. मेरे से 1 हफ्ता नहीं हुआ भाई. 1 हफ्ते में भी 2 दिन छुट्टी था. नहीं, बट मेरे 1 महीने भी मैंने 1 हफ्ता तो मारा रहेगा छुट्टी. डांडी मारा मैंने भी 1 महीने में. अरे तो- छोड़ भाई, अभी मैं गाली वाली दे दूंगा. अभी वो टॉपिक पे मत जा. इंटर्नशिप वाले गुस्सा आ जाएगा मेरे को. नहीं यार, कॉर्पोरेट है ही अलग चीज. कॉर्पोरेट इज द रियल फियर ऑफ टॉकिंग टू पीपल, क्योंकि उधर पता है क्या स्टार्ट होता है, हायरार्कीज. उधर जब हायरार्की स्टार्ट होती But है the तभी thing मेरी is, फटती है. No, but the फर्स्ट thing- डे मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर किसको बुलाओ, मैम किसको बुलाओ. मेरे को तो यही चीज समझ में नहीं आ And रही. everyone is just like, oh, don't call me sir, madam. हाँ. You are fucking 40 years old. वो लोग थोड़ा चिल रखना रहता है ना environment. No, but the thing इसलिए is, सब मेरे जहाँ पे I was working, I was in a design agency. उधर people were very chill. Okay, वहाँ पे तो मतलब What was the average age of people there? I mean, everyone is elder to. I was the youngest, definitely. Yeah, but what is the average age? Average Approx. above the age of 25. So young Fair only. Yeah, but they were like all chill, you know. That's like the older I Gen genuinely Zs. was, making jokes, having fun over there. You know, of course, work भी बहुत था. But other than that, I genuinely felt like I could connect with people much elder to me, and I don't know, मेरे को पता है. Maybe because you're just a mature person. No, but maybe you call it weird or whatever. But I genuinely can connect more and better with people more like older than you. Yeah, because they're very chill. Is that why I you feel connect with everyone me our age also? is a little more hostile. Yeah. Do you feel that way? I think that just adds to my fear of talking to people because what I feel is, and what I've noticed as well,
always it's the people that I surrounded myself with who are our age who are always hostile in some way or the other. जिसकी वजह से वो fear. I have never had issues talking with someone much elder. I can always sweet talk my way out of things or something or the other, right? खेली But नहीं हाँ मतलब you know उनका बात करने का response and everything was much better. And I don't know why people our age seem to have this attitude अरे तेरी तो मैं बड़ा डॉन हूँ सब भाई. लोग गुंडे समझते हैं खुद हाँ को भाई अबे याद है ना स्कूल में everyone used to The consider non- themselves like Yeah. no, स्कूल के ना genuine भाई गुंडे मतलब they Sorry, had वो मैं थी। gangs and everything. क्या दादी Okay, इतना gang what the दादी gang fuck? था एक. What school were you चाची guys going to? ऐसा इतना अरे तुम भाई लोग के पास छोड़ यार, दादी that's a चाची whole गैंग different कौन सा topic. चल रहा है भाई? हाँ. उसके लिए एक अलग Yeah, जगह yeah, वापस yeah. हम लोग बाप रे दादी God. gang was crazy. एक बार ना let's do one episode with BBL. देखो what? it will be crazy bro The entire BBL It and will be we'll crazy. give you the entire load of our school. Sure. We'll Will tell be you about crazy. दादी gang. अभी मेरे को पता. Do I want to know now? Do you not दादी want to gang. know? I want to know. I want to know. हाँ तो फिर the gang was Gossip- crazy भाई. gossip ऐसा होगा दो तो- gang अरे थे. बहुत मेरे फालतूगिरी मेरे होता था पास तो भाई। ऐसे गैंग्स नहीं रहते थे यार. हम और लोग we had थोड़ा gangs अच्छा मतलब है। गुंडे थे ऐसे. हम लोग को गोवा वगैरह लेके जाते थे ना. हाँ हमें नहीं लगे हमें टिकू टिक्कू चीनी चीनी वाली हम लोग का टिकू चीनी वाली फील्ड ट्रिप था. वाह आ गए बड़े बट लोग. मैं एक और चीज़ बोलूँगा वन ऑफ द मेनी रीजंस व्हाई आई लेफ्ट माय इंटर्नशिप यू नो वाज बिकॉज आई tried talking to different people there who were working there and उधर average age था around 28 plus ही थे सब लोग like 26 plus थोड़े बहुत लोग 26 27 28 around 30s mid 30s में थे और बस में 3-4 चच्चा लोग थे उधर चिचाज एंड चिचीज तो उसमें भी लाइक द पीपल दे उन्होंने अच्छे से मेरे को वेलकम किया था कैंटीन में ऑल्सो दे वर लाइक वेरी नाइस टू मी एंड ऑल दैट बट यू नो आई इट वॉज ऑलवेज मी जो जाके बात करने की कोशिश करता था कुछ पूछता था वो लोग की साइड से कुछ एफर्ट आता ही नहीं था और यू नो आई पर्सनली मी आई कैन नॉट वर्क इन सच एन एनवायरमेंट यू नो वेयर देयर इज नो कम्युनिकेशन ओनली एट ऑल Yeah. पूरे टाइम काम मेरे से नहीं होता है भाई मस्ती मजाक भी रहना चाहिए एंड उधर वैसा था ही नहीं उधर लाइक वो लोग मस्ती मजाक करते थे बट वो लोग अपने में ही करते थे वो लोग मेरे को कभी इंक्लूड नहीं करते थे Yeah. so मैंने like I talked about this with my parents and all that and that's why I just left because like there's no point in you know because I want to learn something Yeah. if I'm not interested only अगर मन ही नहीं लग रहा है मेरा उधर तो मैं क्या ही घंटे भर का लर्न करूंगा कुछ भाई I completely understand. I was blessed क्योंकि जो मैं काम कर रही थी internship, I feel I could have left much earlier just you know on the basis of work. But the people that I was with, they were so nice to me all the time. हम लोग थे ही दो लोग. It was starting only with me and my manager क्योंकि मेरी manager she is also like 23. So you can't even Wow, call that. She's like 4 साल बड़ी है मेरे से बस. And then there was me and she really needed an intern. That's why I was there. First 2 weeks she was like strict manager and then suddenly we were talking and we were it's a friends. good thing Yeah, फिर और एक intern आई because we needed and then we just created like this family and then there was this another guy that also came. फिर हम लोगों ने family बना दी मम्मी 2 बच्चे मामा and that's majorly why I lasted for 6 months here क्योंकि whatever but वो तो हम लोग का बस room था. I have like gone outside the room and then I've seen how people are like I see completely they are waiting for the moment anyone makes one mistake कि वो उनको जाके उधर फाड़े CEO के पास they are just waiting for a moment to pull you down and that's like they will try no matter how nice you think someone is they are waiting to get some sort of dirt on you they wouldn't care if your career ends they just वो उनको मजा ही आता है doesn't matter what the Yeah, fuck yeah, is going on उनको yeah, वो yeah. gossip चाहिए मतलब चाहिए worse than high school I will say worse than high school there are a lot of mean people out there and worse is ki because you know they are all talking in this secret language lingo not even corporate Complicated lingo रहता है अलग ही कुछ बात करते हैं वो corporate लोग lingo भी नहीं बात कर रही हूँ मैं वो उन लोग का देखो पता है ना क्या हुआ like about like someone and then like because it's HR and this and that so no one's going to reveal but it's like everyone just knows what happens and I am new I have no idea and फिर वो लोग इधर आधा घंटा बात कर रहे हैं मेरे रूम में मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ उधर it's Yeah. very awkward you need a lot of mental energy just to Yeah. be there in that space and when I left my internship I was a bit sad क्योंकि I really liked those people but then I felt much more free अगर मेरे को freak out करना है तो मैं इधर जाके अभी I will lay on the ground I don't give a shit अभी I'm just free feels Same. free even I'm free एक Yeah. हफ्ते के 4 दिन का काम करके I'm तो Don't free know only. for why like we few entered months. corporate here
कॉर्पोरेट थोड़ा सा very ऐसे fucked इची up आ है। जाता है 6 months अबे I भाई put मेरे को तो वापस स्कूल वूल में जाना है, मेरे को भी नहीं होता है School was ये crazy nice. बेस्ट। अभी देखो जाना होगा कि नहीं नहीं अरे तू स्कूल मेरे स्कूल में आ चलेगा। मेरा अभी नहीं, स्कूल अभी मस्त आजा था स्कूल में, अभी मजा आएगा, हाँ क्या अभी मजा आएगा? अभी मजा आएगा। क्यों हम टीचर के हम साथ हमारे लफड़ा अभी अभी हम बेटर फ्रेंड्स बन गए ना, तभी थोड़ा। नानी गैंग हाँ अभी नानी गैंग में हम लोग क्या, हम लोग कुछ नाम हम नहीं कोई था। गैंग में ही नहीं थे। हम लोग का तुम भाई लोग मेरे लोग ही पे था बस पहले गैंग से ही। करते थे भाई, हम लोग उतना का ही भाई था। लोग ही था पहले से ही। हाँ यू आर ऑलवेज भाई लोग एंड देन भाई बहन लोग। वी डोंट टॉक अबाउट दैट। वो बीबीएल वाले इफ कभी हो गया फॉर विल टॉक श्योर अबाउट इट तभी। आ जा यार मेरे स्कूल में मस्त था मेरा स्कूल मैं ग्रीन हाउस कैप्टन थी फिर मैं वाइस स्कूल Red कैप्टन भी House थी the स्कूल में कौन goat. बनता है भाई? रेड मैं- हाउस द गोट भाई। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माय हाउस बिकॉज़ देयर इज नो पॉइंट। रेड हाउस येलो सबसे एवरीवन सेम येलो किस हाउस बेसिस पे देते थे वो लोग हाउस, मेरे को वही क्या नहीं पता पता? है। अरे वो Random- ऑरा random देखते थे अगर लल्लू होगा तो येलो में डालते मेरा और अच्छा था लगता है। तो कौन से इसमें था रेड हाउस सबसे छी। बेस्ट, मेरे को तो पसंद था रेड। अरे एक्चुअली ब्लू सबसे बेस्ट था मेरे को लगता है तू रेड में था, मेरे को अभी तक नहीं मैं ऐसा येलो याद में था। मैं yellow ग्रीन में में थी था। यार क्या करूं हाउ डिड वी गो फ्रॉम टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स टू अबे हाँ बे येलो हाउस, रेड हाउस, ब्लू हाउस? अरे वो चाइल्डहुड में एक बार गए तो फिर हम लोग Childhood जाते ही memories, है यार है ना? उधर आते ही नहीं वापस उधर हाँ But yeah, so can you please talk about introvert and extrovert and ambivert? Yeah, sure. So, introverts are not like the people that like to be alone, but they like to surround themselves only with like a very certain amount of people. They will be very happy with the people, like you said. Agar if you get to know someone, you'll be very happy with them. You'll keep talking to them. That is definitely there. And then there are extroverts who can just, like Bunny from कौन सा movie ये था? जवानी है ये दीवानी। जवानी है दीवानी हाँ वो वाला माय गोट। किसी से भी बात कर सकते हो तुम दे जस्ट एंटर अ रूम एंड देन वो ऑरा ही शिफ्ट हो जाता है एवरीवन इज जस्ट लुकिंग एवरीवन इज टॉकिंग टू देम वो एक रहता है बट आई फील लाइक नो वन इज अ कंप्लीट इंट्रोवर्ट नो वन इज अ कंप्लीट एक्सट्रोवर्ट आई मीन स्टडीज आल्सो प्रूव इट वी आर समवेयर इन बिटवीन व्हिच इज एम्बिवर्ट फिर उधर उन लोग का लेवल्स ऊपर नीचे रहता है बेसिकली सिमिलर टू ए टाइप एंड बी टाइप पीपल बट वो अलग है एम्बिवर्ट्स रहते हैं ना तुम लोग डिसाइड करते हो तुम लोग को कितना टाइम रहना है आई फील लाइक आई एम अ वेरी एक्सट्रोवर्टेड एम्बिवर्ट इफ आई कैन पुट इट लाइक दैट आई टॉक think टू अ I'm an लॉट ऑफ ambivert, पीपल definitely. सेम। You're an extrovert. you are नहीं extrovert You are very extrovert. you See, know I'll be how you honest. enter the room See, I'll be very honest, okay? बचपन में ना when I was in 7th 8th grade I was थोड़ा healthy था, मोटा था Same. मैं Same. एंड लाइक तभी ऐसा कुछ अच्छे सा दिखने का कुछ लुक्स वुक्स आनी हो। याद है पहले 7th 8th में किसी बच्चे लोग ऐसा गर्लफ्रेंड घुमाते थे, वो पता नहीं हरकत करते थे सब लोग स्कूल में। 7th 8th में तुम लोग का क्या चल हाँ रहा भाई है बहुत Third कुछ grade हुआ से हम चल लोग रहा है के हमारे स्कूल हम लोग के में। स्कूल में बहुत कुछ होता था। तो होता है। मैं कभी वैसे टाइप का था ही नहीं। लाइक इवन आई यूज्ड टू हैव क्रशेस ऑन झूठा, गर्ल्स एंड ऑल झूठा, दैट, ये सब तो था बट किससे बात करो वगैरह नहीं, बिकॉज मेरे में सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं था ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस था ही नहीं मेरे में, तभी मैं था इंट्रोवर्ट। बिकॉज आई फील लाइक सबका अलग अलग होता रहेगा। मेरे को जब भी मेरे अंदर अगर इफ आई फील कॉन्फिडेंट ना, देन आई एम एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन। इफ आई एम लो ऑन कॉन्फिडेंस ना, आई विल नॉट बी एक्सट्रोवर्ट, आई विल प्रॉब्ली बी एन इंट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट के अराउंड। बिकॉज मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, तुम लोग को लगता रहेगा कि आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, बट आई नो दैट कि कभी कभी व्हेन आई फील लो थोड़ा, या मेरे को लाइक अच्छा नहीं लग रहा है, I just become थोड़ा introvert. But that's just That's like energy, yeah, social energy No, it's and not about stuff. energy. And the In people that general as you're well. with, it also really matters with the people you're with. अगर मैं इधर रूम में हूँ, I don't know anyone else here, I'm bound to just not talk to people. I might like initiate conversations in general. अभी that is because अभी मेरा personality है that I just don't like to not talk in a room of people. I would like to have like one person with me, कुछ तो बात करने के लिए. Same. लेकिन no, I won't talk really, not really. See, for example, अगर मैं किधर आया एंड मैं उधर किसी को जानता नहीं, सिर्फ एक ही जन को जानता हूँ, तो आई तो भी प्रेइंग कि भाई वो मेरे को एक असिस्ट दे कॉन्वर्जेशन में इंक्लूड करने को या स्टार्ट करने को। बिकॉज इन दैट थ्रू दैट बाकी लोग से भी बात हो जाएगा। Yeah. आई डोंट रियली गो एंड स्टार्ट टॉकिंग सामने से इफ आई एम विद स्ट्रेंजर्स। Okay, I've done that. Never mind. तो मेरे को लाइक मैं Yeah. उस हिसाब से हूँ। मेरे को जैसे लाइक यू ऑल सेड अभी कि आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, बट sometimes it depends, as you said, around the people as well. So yeah. Yeah, I mean,
I remember कि जब भी I didn't think that I was cool. I thought I was like मैं कुछ ऐसा looks वगैरह कुछ what you are going to have when you're 12 years old, bro. गोलू मोलू सा. And then in 8th grade there was this one guy that had a crush on me. So मेरा emotion like you have a crush on me? Like that's crazy. I didn't like him back. No fucking shit. But I was like फिर वो थोड़ा ज़्यादा हो गया फिर. But that one emotion boost that you get, the self confidence कि someone likes me while I'm seeing that there are like all of my other friends जिनका चल भी रहा है लोगों के साथ like genuinely चल रहा है and someone likes me, then I was like थोड़ा सा अरे बाप रे ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर मैं तो चलेगा. भागता था भाई लड़कियों से स्कूल के टाइम पे. मेरे को तो मेरे एक को बार अबे सही में तो मेरे को 8th स्टैंडर्ड में there's one girl, she came and she was like I like you and all that. भाई मैं भाग गया दूर. मेरे को चाहिए ही नहीं था कुछ टेंशन. सही मैंने में मैंने मेरे को क्या डर लगता था कि भाई घर पे कंप्लेंट कर देंगे, मेरी मम्मी बाद में मेरे को मारेगी वारेगी, स्कूल में हरकत हो मेरे को because कीचेन वगैरह गिफ्ट किया था. मैं बोला मैं इससे करूँ क्या. हम लोग के स्कूल में तो एक याद है एक लड़की ने लिटरली राउंडर से नाम लिखा था उसके बॉयफ्रेंड का. तेरे को याद हाँ, है? नहीं तो What याद the नहीं है fuck? स्टैंडर्ड में. बोल सकता हूँ, बोलूँ क्या नहीं, मैं? नहीं, नहीं, नहीं. बाद बाद में बोलता हूँ. we had people ऑफ कैमरा बोलो, ऑफ ऑफ कैमरा कैमरा बोलूंगा. we had like stealing people's boyfriends. हाँ लाइक मतलब कि इन Bro. लोगों को पता है दो लोगों का चल रहा है, उसके डेस्क में दूसरे बंदे का लव लेटर है, मतलब कि उसने खुद ही डाला है. एंड देन द गाय इज जस्ट लाइक व्हाट. एंड फिर ये दो लड़कियां भिड़ रही है कि लाइक अरे ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है, लाइक तेरा नहीं अभी मेरा हो जाएगा. एंड द गाय इज जस्ट लाइक मेरा I तो don't- feeling मेरा बचपन से ऐसा ही है. बचपन में भी अगर मेरे को इंटरेस्ट नहीं था ऑलरेडी मैं भाग जाता था दूर. अभी भी भाग जाता हूँ मैं. ना वहाँ कुछ बोले सीधा भाग जाऊंगा, मैं गायब हो जाऊंगा. हाँ, फेस ऑफ अर्थ. हाँ मेरे को बुरा लगता है ऑनेस्टली स्पीकिंग. सी मैं तो मस्ती में बोल रहा था कि आई हैव नेवर फेस रिजेक्शन. इवन आई हैव फेस रिजेक्शन इन माय लाइफ. ऑब्वियसली सबने किया है फेस, अनलेस यू आर टाइगर श्रॉफ या पता नहीं. टाइगर श्रॉफ शुड फेस टाइगर रिजेक्शन. श्रॉफ यार Sorry. पहले अच्छा दिखता था यार एक मूवी टाइम में पे. ही मस्ट बी फेसिंग रिजेक्शन. रियली उसके लास्ट टाइम इंटरव्यू में पता नहीं क्या हुआ था. ये बट व्हाट I द was saying फक. कि क्या बोल रहा था मैं. टाइगर यू आल्सो हाँ, फेस भाग रहे रिजेक्शन. रिजेक्शन हाँ. रिजेक्शन. हाँ एग्जैक्टली. तो मेरे को बचपन में भी जब मैंने भी एक दो बार तभी फेस किया था, तभी आई फेल्ट. उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस ही चला गया था. मैं उसके बाद मैंने किसी को अप्रोच किया ही नहीं था जब तक मैं पूरा पतला नहीं हो गया, जब तक मैं थोड़ा खुद पे आई स्टार्ट वर्किंग ऑन माई सेल्फ. उसके बाद आई फेल्ट लाइक कि चलो आई थिंक नाउ आई एम फॉर मी आई एम डिसेंट. एक टाइम पे आफ्टर स्कूल अराउंड 10th ओनली. उसके बाद आई स्टार्ट गेनिंग कॉन्फिडेंस यू नो. उसके बाद कुछ हुआ एंड क्या मैं भूल गया मैं क्या बोल रहा तो था भाई. रिजेक्शन. Basically, I think body also matters, right? No When talking भाई. to strangers. See, मैं तो एक चीज़ You're talking genuinely about बोलूँगा. confidence, ना? एक चीज़ देखो जेन्युइनली बोलता है, नहीं सब लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ. जस्ट बी एक ये चीज़ तुम अपने दिमाग में डाल के रखो. फक एवरीवन, फक एनीवन एंड एवरीवन हु सेज कि भाई यू डोंट लुक गुड, यू आर नॉट डूइंग गुड, तू ये गलत कर रहा है वो गलत कर रहा है. फक देम. ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई तुमको जो करना है वो करो. एंड यू शुड फील गुड एंड यू शुड फील प्राउड इन वॉट एवर यूर डूइंग एंड हाउ एवर यू लुक भाई. या डेफिनेटली. दैट्स इट. इतना ही होना चाहिए बस. वो तुम peer अगर तुम्हारे pressure आ में जाता है. सी इट्स नॉट ईजी ये ट्रेट लाना तुम्हारे अंदर. इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम पर्सनली स्पीकिंग. मेरे को भी भाई ऐसा एक दिन अचानक से उठ के नहीं आया है, या एक दिन जिम चला गया, एक हफ्ता जिम चला गया, चलो भाई भी मैं आई एम गुड ये वो. इट टेक्स टाइम. सो यू नीड टाइम. बट यू नो एट दिस पॉइंट इन योर लाइफ आई एम श्योर एवरीवन हु इज वाचिंग दिस इज प्रॉब्ली अबाउट 20-19 अराउंड आवर एज ओनली. अभी लाइक सब लोग को ये एज में ना, हम लोग को अभी सबका कॉलेज वॉलेज खत्म हो रहा है, सब लोग को ये अपने अंदर लाना पड़ेगा ही इन अ वे. अभी ये नहीं बोल रहा कि लाना ज़बरदस्ती लाना पड़ेगा, सब लोग इतने ये नहीं होते कॉन्फिडेंट. बट दिस इज समथिंग दैट वी लर्न आगे can जाके. build up. वील यू नो अपने आप ही आ जाएगा हम लोग के अंदर. और ये रहना भी चाहिए दिस Yeah. ट्रेट. होना तो चाहिए. व्हाट टाइम. It's not easy though. It's not easy at all. It takes a lot of time and effort, but you will get there. हो जाता है. Remember how I looked in 11th? I had Yeah. bangs like that went like ऐसा, and I had पता नहीं कौन सा मेरे पास एटीट्यूड आ गया था because like oh I'm in college now, and now I look back and I look so ass. I looked absolutely fucking ass there. लेकिन वो जो मैं बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में थी, दैट वाज द वन थिंग दैट बिल्ड माई कॉन्फिडेंस बिकॉज आई न्यू कि डजेंट मैटर हाउ आई लुक और व्हाट आई एम डूइंग. आई नो दैट मेरे में वो एक सेल्फ एफिकेसी है, द बिलीव दैट आई कैन डू थिंग्स, आई कैन अचीव थिंग्स. आई हैड दैट
because I was constantly doing things. People were telling me, "ठीक है तू कर रही है." I was screaming at people. I was doing that. I don't know if you have seen me do all of that bullshit where I'm screaming at people because I'm mad at them. But याद ही होगा. क्योंकि तू था नहीं ना अभी. Bad friend. नहीं No, नहीं. we weren't very good friends. Now. झगड़ा हुआ था. No, we weren't very अच्छा, good friends. you all were not friends only. अरे तभी तो हम लोग मिले थे. अच्छा, you all met in 11th grade क्या? Yeah. तो तभी रह जा, LS रह जा ना. stop यार. अबे मैं I'm still in that college यार. हाँ. चलेगा भाई, I'm in Wilson College. ठीक है विल्सन अच्छा ही था, मेरे को जाना था उधर. Events होते हैं, मेरे को साइकोलॉजी में ना. environment is also nice. Beach, you have the beach. Like we said before, and I'll say it again, is it really open-ended if there are no technical difficulties? Open-ended do an episode without technical difficulties challenge. Impossible. Again, failed Yeah. for the third time. Yeah. अभी तो पैटर्न बन गया. So हाँ, like अभी- now we have to have that. Sorry यार guys, sorry. हर एपिसोड तुम्हें मिलेगा एक It's technical fine. difficulty. Guys, we can take a break from now. Yeah, it's a good break for you guys, you know. Yeah. All right. And we are back here with Yash Acharya, Mr. Hi, guys. Arsenal hater. Yes. I thought you were going to say कि Arsenal fan भाई. No. Chalo, Arsenal now hater. that we're on the topic of hate, Hater. we want to discuss how easy is it to hate something. So I think the best person to talk about that is Yash Acharya, Mr. Arsenal hater. the professional hater. मैं बोल दूंगा तो मेरे को लार्पर बोल See, देंगे. if your name is I automatically hate you. Okay? Yeah, I'm talking to you. याद But रख what बेटा. do you actually mean by you hate him? अभी तो हम थोड़ा deep dive करते हैं. What do you mean Let's by the hate? deep dive into what do you mean by hate. Do you really hate? No, I love him. He's my friend. Obviously, I love him. No. In general. पूरे podcast में वरना नहीं. No. I mean, In general. when we talk about hate, Yeah. do you really consider or do you ever really think कि when you say that you hate something, do you actually hate it? See, it comes naturally. What No. do you mean naturally? The hatred. No, like, again, no. What I'm not asking ki how does it come. I'm saying when you say you hate something, do you mean that you hate? What is your See, it depends definition ना. of hating? It depends. For me, it depends on the person, on the things. So ऐसा अभी समझ मैं बोलने के लिए बोल सकता हूँ कि भाई I hate this, बाद में I love it. आगे जाके it depends On the type of people or the type of things or the type of things the people do. It depends. It differs. so why? So agar if we go on the topic or the subtopic that you said, people. Yeah. So let's say you hypothetically say you hate someone. Yeah. What is it like? How do you define your hatred? Good question. I don't really think about that much, to be honest. If Or if do I you hate just like someone, I say just hate them. because like you think That's that the there is a easiest word to say. feeling, that there is this feeling, and now you are associating it with what you think that the word hate means. Ki I don't like something. Is it hate or is it the fact that you don't like something? No, it's honestly, it's just if I don't love it, I hate it. It's that simple. To you? Really? No, I'm joking. भाई लोग हंसी नहीं रहे भाई, थोड़ा awkward कर रहे हैं लोग. Okay, ठीक है. So I feel that like love and hate, people say that they are opposites. I get it, but then there's like this another thing that which is indifference. I prefer indifference over Yeah. hatred, and I Yeah. prefer love over indifference. Hate is very complicated. You have to get to know something to hate them. To hate something, anyone or anything, you have to emotionally invest time and efforts. I can't say that, you know, very simply matlab ki you are having conversation with someone, you're having conversation with a few people, they're talking about something, they're talking like, I love this, I hate this, they ask you, you can't say anything, you can't say that you love it or you hate it, you're indifferent, तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है उससे क्या हो रहा है, No opinions. because you don't know that thing. Now there is like the complicated one where you love something but you also hate it. I think that's very into like relationships. Yeah. Love-hate relationships. Yeah, love hate relationships. I feel like that is very there. You hate something about it, but you also love it at the same time. It's very complicated. Have you ever had a love-hate relationship with someone? Once. I don't think it's ever with someone, but With something. again, I don't think I've ever hated something. You know, I think
I also throw around the word hate a lot very easily. Ki, you know, yeah, I hate you, bro, you know, or I hate this or that. But I think it's not hate really. I think it might be, you know, because for the lack of a better word, we often end up using hate, Hate. right? Hate is a very big word. You know, to hate something, matlab, it's a big thing, right? Hmm. Hatred is a very big thing. You know, like if if like I don't know how to really explain it like अच्छे से, but It is just very. Agar if you dislike something with a passion, you then call it hatred. yeah, See, it's not a good thing to have that. Honestly speaking, it's not good to hate something or someone. ये तो बस मैं मस्ती yeah, के लिए बोल रहा था इसके पहले भी. See, people think कि भाई, for example, there are many different, scenarios. Or for example, if I don't like something and the सामने वाला person likes it, I'll start hating the सामने वाला person as well, because he likes that thing and I hate that thing and he likes that thing. So I'll yeah. automatically start hating that person. That is something that many people do nowadays, and होता है ऐसा I आजकल think it's बहुत. just easier to dislike something. It's very asa. It's much more easier for you to have negative feelings, Yeah. Fair enough. to show negative feelings, and to have those negative feelings instilled in you than it is to be nice, to be kind, to be moral. Hmm. That is like very important because if you are doing, then you're actually putting in time, efforts, energy, all of that. You're doing that mental calculations कि मुझे करना है. Like, Oh, have hating you on ever someone. had like a moral dilemma कि should I do this? It is like the simplest thing. You see someone else throwing garbage on the street, it is your moral duty as a responsible citizen to tell them to not do that. But at the same time, it is taking your time and effort. You are also thinking about it. Log kya kahenge? How will they respond? Hmm. So instead, you just don't do anything. So now that becomes indifference, and you hate it when you are actually doing anything. Matlab you are seeing them do that, and you want to do it, but you can't. So that just becomes like your moral dilemma because it takes out things from you. It is difficult to do, but you don't have to invest anything to like hate. Not even hate, just to dislike things. It. I have seen people invest so much time hating on Hating. things, wo alag hi hai, but that is because they probably have those resources to do that. But for usual people, I don't think that they have the resources No, to I go think I, इतना but ये करे. honestly, I have hated someone college में, and honestly, it has changed something in me. मतलब Hmm. genuinely, मतलब I genuinely hated two people. Okay, first year में, I really hated them. Okay, and it was because they themselves were such big haters. Okay, like constant cribbing, this that. I used to dislike that a lot because मेरा mood और खराब कर देते थे, you know. And that hatred also, I started realizing कि because I hate this person वगैरह, I started becoming more like them, you know. Instead of being cheerful, मेरे को तो कॉलेज में उल्टा मजा आता था जाने को कि you know, अरे फ्रेंड्स मिलेंगे, you know, कुछ ना कुछ मस्ती होती, because I was friends with the whole class, and my friend group was very tight. Okay, we got very close very quickly, and we were very like good friends. हम लोग पूरा टाइम हंसते मजाक करते रहते थे क्लास में, राइट? बंक वंक मारते थे साथ में वगैरह. बट जब that period of time when those two people were also the part of the friend group, and I used to really hate them. Okay, and तो पता नहीं वो एक चेंज तो था मेरे में. Hmm. एंड इवन व्हेन आई रियली हेटेड समथिंग ना, वो था, यू नो. आई यूज्ड टू फील कि अरे यार, मतलब आई यूज्ड टू फील अ प्रॉपर इमोशनल चेंज इन मी, you know, Yeah, कि it really, hatred does change something in you, and you start to become something you really don't like. it starts rewiring your Yeah, neural yeah. paths. Like now, I hated a certain person for a huge amount of my time in my life. But as soon as I gave, and Tabina, I think I was really a very different person. And ever since I've given up that hate, and I've become more of ki, you know what, you do what you want, I'll do what I want. It's been much easier now. Letting go, the Letting art go. of letting Yeah, go. yeah, yeah. Oh my god, no, Yeah, the genuinely, but like nuances. letting go of hatred is very, really, really important. Not only like more for yourself than someone else, Yeah, right? I Like, think that is very very true. मतलब कि I know that it's the college that I go to is not like the best college, but my college has treated me well. Personally, I feel like I have had some of the best moments there. It is not a bad place to be in.
I mean, I'm sure everyone has their experience. Everyone has experience कि मुझे but I don't think that it's like just the college that it's the people that make you feel bad. But I love going to college. I am मेरा college अभी start हो गया. I'm excited to wake up every day at 5 Same, a.m. same. to go all the way. सुबह fast train लेके slow train लेके मैं सुबह 7 वाले lecture को जाऊँ. I'll come back. My lectures will end like at whatever time. I'll meet my friends. I'll be with those 30 people in every single class every single day for 6 hours with the same 3 teachers. I'm excited for it. Like Yeah, I'm yeah. genuinely excited for it. It's And fun. I know there are like 100 people that are like, ew, college, and I just can't relate with it. But it's also, when you talk about hatred, it's like, why is it so much fun to talk about the people that you like? You're waiting. Whenever I बोला ना, you're waiting for like the smallest thing for Inconvenience. inconvenience from Mistake. others also. Ki, like, do you know what she did? And you're grappling at it like fucking hungry bulls. Ki, like, क्या किया, क्या किया, क्या किया? So that you can just hate on it, like stalking people's accounts, observing people in class so you can hate on someone, observing people everywhere. It's crazy. Just so, but you will not notice the good things that people do as much, and No, you have but to put in अरे efforts to do no, that. like अभी now that we're on call, अपने मेरी हमारी कॉलेज में Mm-hmm. मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उनके साथ झगड़ा वगड़ा हो गया. I hated them because they stopped talking to me. Or you hated फिर एक them, दिन or did you just dislike them? no, I hated Okay. two Yeah. friends Okay. that I Yeah, had yeah. left in 12th, Yeah. right? So after that एक दिन randomly मतलब समर वेकेशंस चल रहा था फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद. Mm-hmm. Randomly I get a follow request from one of them. He called me, I talked to him, and वो सब कुछ वो moment में चला गया. All the negative feelings that I had from him, everything just just went away. मतलब it was amazing. Genuinely I felt very light. And जब पता चला कि what was the reason behind their own ये वो, and मैं जो उतना वो दिल पे वो एकदम heavy पत्थर लेके बैठा था, everything just went away with just one conversation. वो एक conversation with him, and now I video call him, like वो मेरे को video call करता है बीच बीच में, मैं उठाता हूँ, हम बात करते हैं about things, and I love that. Like I feel when we open our hearts more genuinely, बहुत बहुत अच्छे experiences आ with सकते हैं. friends now वो होता ही अलग चीज है because see even we have our own personal experience. You remember school के time पे Yeah. we hate is a very strong word to use हम लोग के बीच में, but like dislike तो था एक point पे, right? I feel like दोस्तों के बीच में वो hatred नहीं होता है, दोस्तों के बीच में miscommunication होता है which turns into hatred or disliking. अगर Yeah. बहुत सामने वाला elongated time Yes, चला गया तो वो it exactly. turns into those And bad as you said feelings. कि friend request भेजा, फिर तुम लोग ने बात किया, you felt light. तो यही होता है because भाई देख दो अभी फॉर एग्जाम्पल कोई रैंडम स्ट्रेंजर रहेगा एंड इफ दे आर हेटिंग ऑन मी एंड आई एम हेटिंग ऑन देम, मेरे को घंटा फर्क पड़ेगा बिकॉज दे आर स्ट्रेंजर एंड आई डोंट रियली गिव अ फक अबाउट देम. बट अगर मेरा खुद का दोस्त रहेगा तो दैट इज अ होल डिफरेंट पर्सपेक्टिव, होल डिफरेंट थिंग कंपेयर टू Yeah. दी Because in the end, what you crave is the attention. You crave to be considered. कि तुम मुझे consider करो, तुम मुझे उतना attention अभी दो, for because you're saying that Yeah. that I am your friend. like for example even us when we had that conversation after our जो भी हुआ था, even I felt very light. I was very happy कि भाई मेरा दोस्त इतना अच्छा दोस्त था स्कूल का, हम लोग वापस रिकनेक्ट हो गए हम लोग, बहुत अच्छा लगा था तभी भी. so that is all miscommunication in my opinion. that is not hatred. friends के बीच में मेरे को नहीं लगता कभी I mean, hatred ये होता तो in the end it comes down to conflict resolution. Yeah. But if I talk about just I But even know, conflict does Lead to breed hatred a but lot. that is more of like you have an actual involvement into this thing. Like it's So a you mean relationship. Where But there's no involvement. and there no is hatred. absolutely imagine people that are just like, you hate on people for existing. Hmm. There is a lot of times maybe people in your class that you've never spoken to. There is like no reason for them to talk to you except that they're your classmates. Neither of you have ever had a bad word, neither of you have ever been rude to each other. You have no idea. Like if you ask someone ki, oh, why do you not like her though, they are just going to be like, because she's a bitch. And then you're going to be like, but explain, like she's a bitch तो फिर कुछ तो किया होगा ना उसने for why you do not like her. And they will not have like a answer Any which you good can reasons. take as like a justification.
they just like, we just don't like them vibe के basis पे. नहीं पसंद तो नहीं पसंद, वैसा हो Yeah, जाता है ना. like it's okay for you to not gel with anyone because you cannot please everyone in the room, but hating is a strong word because now hating people actually starts affecting you, others. So you cannot have that pessimistic environment around you क्योंकि फिर वो bleed in होता है. It is very toxic, it gets very poisonous and it leads into all of your rivers. It's horrible. It's like pollution. See now, for another experience of mine, uh, guy I was talking about. I'm not hating on him, Abhi, huh? Please, sorry. So, the first time we met, how we became friends, it is a very crazy story. You know, अभी तभी भी like हम लोग का एक टॉपिक भी था जिस पे बात की अभी हम लोग ने, fear of talking to strangers. Yeah. It's connected to that as well. You know, I always thought कि ये भाई ये तो थोड़ा गुंडा जैसा है, ऐसा बैठा रहता है पीछे. एंड मेरे को मैं ऐसा ऑटोमेटिकली तभी उसको हेट करने लग गया था स्कूल के टाइम पे, बिकॉज आई थॉट कि भाई ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को थोड़ा इससे डर वर लगता है, थोड़ा बहुत गंदा गंदा बच्चा लगता है मेरे को. एंड आई वॉज अ वेरी गुड चाइल्ड पहले, हाँ. स्टिल एम. Oh. So and वो मेरे पीछे बैठता था. And the first time we had a single conversation is when we fought. Oh. We literally throwed hands. That was the Threw. first time. That was no me. Throwed me through. We threw hands. And that was our thank you. बोल. And that was our first time having a conversation in our life. And उसके बाद से अभी देखो भाई, he's a very good friend of mine. Yeah. फीफा खेलने नहीं आता पर. हाँ, फीफा खेलने नहीं आता है लेकिन शानू वो है एक नंबर का. खुद खेलेगा, मेरे से डर लगता है उसको. मेरे को होता है, I have friendship crushes on people. I want to be friends with someone like really bad, like this particular person, and then when if we just don't become friends कि किसने approach नहीं किया या फिर she doesn't know that I want to be friends with her, तो उसको बस वो तो लग रहा है कि ये कोई तो है बंदी जो मेरे से बात कर रही है, and then if it does not move on then I'll just be like bitch. But like it's what is her fault in that, you know? Yeah. So I have been trying a lot more to look at the good in people. I feel like I used to do that a lot more in childhood, where I used to before having negative emotions. I don't know why the self therapy I used to do ever since the age of 6. Ever since before, you know, hating on the things that other people were also hating on, मैं सोचती थी कि let me think about the good things about them first. कि what are the good things, like ये ठीक है she screamed at me, mostly ऐसे teachers के वाले, you were hating teachers like for the worst fucking reasons. homework दे दिया, she screamed at like not letting you go, ठीक है, it's not, you know, that justified. How can you pick out the good things that they have done, take that into justification, weigh it down, and then you can decide how much you want to dislike a certain person or not? Because otherwise aren't you also kind of hating on yourself? फिर तुम वो judgment बना लेते हो, and then you start associating people जिनके पास same traits होंगे या फिर similar behavior, like one or two same behaviors associate कर देते हो, and then you start hating on them just because of association. Have you hated someone just because they have the name of someone that you don't like? Honestly Like speaking, have you like disliked someone ki like yeah, and it's not Just a because person of that the you name. know? Yeah, just because of the name. Yeah. Exactly. So that is like the type of person. You don't know this person. This is a completely new person. But you do that. Maybe you all do that. That's actually psychology. I mean, I have never personally You experienced might that. just maybe meeting like a lot of different चल मैं people झूठ बोल रहा है. Why- But I've never hated someone Not because of their hated, name. just like Disliked. dislike. No. Like, you know, you just have like a क्या negative झूठ बोल रहा है feeling. भाई. No, but not हो ही never until I know them. Never. Like it's like, oh Never. Yash, I don't like Yashes, and then the person is just like, हाँ, why ये don't you never, like never. Yashes? बोलता तो था कभी यश, I नहीं. don't like यश. कभी No, बोला no, है, like कभी नहीं any बोला है. Yashes. कभी नहीं बोला. ये Okay, स्पेसिफिकली यार, मेरी ठीक बात है, ही करता था. सबका खुद का एक्सपीरियंस रहता हाँ, है हाँ, पर्सनल. हाँ. I have done that But- where I am just like, oh, this name, I don't like people that have that name. Never met this person in my life. But you know what? One more, there's a very underrated feeling, or not even underrated, but one thing I've noticed, at least, कि things start seeming very unreasonable once you give up the hate and you notice someone else hating on the same thing. You know, like, Elaborate. Huh? Elaborate. so like if let's say you and me are hating on a third person, Okay, right, sorry, and Yash. I get to know that person, and okay, you know, maybe I was wrong. Oh, I've And done then that. And then when my friend is hating on this, I'm like, bro, but why? Mm-hmm. You don't know them enough to be hating, you know. And I've seen so many people do that, and I'm like, bro, when you don't know shit,
why do you you know jump to conclusion कि Yeah. हाँ ये तो ऐसा ही रहेगा, you know, what if they are better? People about to call me double face just because I've Are hated you on them, double and faced? then I am double faced. दिखा जरा दूसरा चेहरा. हाँ है उधर. हाँ Yeah. go ahead. Because पहले I'm hating on them and my friends are agreeing to it, and then later I'm like वैसे वो इतने भी बुरे इतने नहीं बुरे हैं, ठीक है यार, like वो मतलब ठीक ही है, ठीक है. मतलब I really admire these qualities about them. They are fine, and then I see something that I remember back to why they pissed me the fuck नहीं off. छोड़ छोड़, बहुत गंदी like है, अरे गंदी ये है, लोग वापस आ गए. गंदी है, गंदी ठीक थी तू. It depends. Yeah. Like as you said कि भाई पहले पर्सन को जानना इम्पोर्टेंट है Definitely, definitely. before Yeah. hating them or liking them. Yeah. Because like अगर बिना कुछ पता रहेगा, हम लोग कुछ आइडिया नहीं रहेगा उसके बारे में, तो we just can't hate तब तक तुम anyone. indifferent रहो, तब तक तुम curious रहो. You can Yeah, try to. but people are also not curious nowadays. People are just Yeah. going based off of It's the third go with the information. flow एक छोटा thing कुछ now. बुरा चीज को कुछ भी सामने वाला करेगा, I hate them, ऐसा ही होता है. Yeah. And everyone as she goes said, off of third information, never the primary, you know, information that they have. Everyone goes off of the second person जो उनका opinion है, उसके basis पे अपना opinion बना देता है. Oh my god, Nobody's down this to is like fuck find shit. out if they really like or hate that certain thing or dislike You or know whatever. what this reminds me of? I cannot speak enough of this right now because मैंने मेरा उतना ठीक से मैंने ऐसे पढ़ा नहीं है. But there is like some Substack article going around which is how to have original thoughts, because nowadays we are just having repurposed thoughts. Yeah. Like you will say like fucking AI slop type shit, bro. ऐसा मतलब इधर से लेके इधर से लेके इधर से लेके. So we are all just saying the We same are things recycling because we are the recycling thoughts it. again and again and So again and that's again. just like I'll read that article next episode में हम लोग इस Yeah, पे बात yeah, करेंगे. I'll read it. ये बहुत stereotypical चीज भी बन चुका है, hating on someone just because, like for example she said, if I've ever hated someone with a particular name, भाई मेरे को reels पे इतना आता है, Yash is a red flag, Might Aryan be. is a red flag, Why? Might No, be. even Ayush is a red flag. Might definitely, be. no, algorithm does also add and breeding in the hate, which But it's we very did fucked talk up. about Yeah, the yeah, last yeah. episode. It is very Rage fucked up, baiting. भाई. It is very fucked up. Because for example, even if I'm being nice to someone, वो लोग लगा कि भाई ये तो बहुत गंदा आदमी, रेड फ्लैग है, मैं इससे बात नहीं करने वाला, नहीं करने वाली. Because the negative emotions are so Exactly. easy to cultivate. Yeah. How will you cultivate happy emotions? Happy baiting? Have you seen joy baiting Bro, nowadays? bro, like people are just always down to hate on something. अबे best People मेरे को वो don't लगता है That is भाई, also how everything becomes. ये cringe. I keeping don't the know. हाँ, homeless on वही. streets, best है वो. मतलब वो फ्री दारू पिलाते हैं वो लोग को. हाँ, बेस्ट है वो भाई, वो है जॉय बेटिंग. Oh my दैट god. इज अ रियल जॉय बेटिंग. एक दिन Oh सोच my रहा मैं भी God. ठेके के बाहर खड़े हो जाऊं, पागल जैसे खड़े रहूंगा, वो भी आएगा. पियोगे जीएम. बट नहीं बट सीरियसली भाई, लोगों को ना बहुत फ्री टाइम मिलता है हेट करने पे, लोगों को गॉसिप करने में बहुत मजा आता है. See, honestly ना, But people don't लोगों- realize कि छोटे से छोटा चीज ना, कॉम्प्लीमेंट, इट कैन मेक किसी का डे. Yeah. I swear, Crazy. bro, I it was does. on the railway station this one day. Some random girl comes to me. She's just like, I really like your top. Where did you get it from? And मैं तो मतलब ऐसे चौकी गया, like, you like my top? अरे, I got it from H&M actually. अरे, thank you. So you also look very pretty. Simple as that. And then we left. We went our ways. मेरे कॉलेज में भी ना, लाइक फॉर एग्जांपल इफ माय फ्रेंड्स हेट समवन ना, एंड बिकॉज दे हेट अस, सो हम लोग में क्या है, ये बहुत लोग ऐसे रहता है कि यू स्टार्ट हेटिंग ऑन अ पर्सन बिकॉज तुमको पता चलता है कि दे हेट यू पीछे से. मेरे कॉलेज में भी आई एम लाइक भाई वो लोग को हेट करने दे भाई, मैं अच्छा रहूंगा. Yeah. सी अभी देयर इज नो पॉइंट इन हेटिंग समवन जस्ट Because they're hating ऑफ द you. सेक ऑफ इट. सी तो भाई इट्स जस्ट कि बी नाइस टू तो फिर एवरीवन. तुम मतलब खुद के बबल में ही जी रहे हो. तुम्हारे पास But खुद का ही the नहीं. thing is कि ऐसा नहीं कि हमेशा नाइस ही रहना चाहिए सामने No, वाले no, के the साथ. hating part. Yeah. बट अगर फॉर एग्जांपल there's a point, there's a limit as well ना, Of कि भाई course. कि तुम कितना ही सुनूंगा मैं भी. एक पॉइंट तक मैं सुन सकता हूँ वो Everything कितना has hate to कर रहा be है. very diplomatic, because in the end people want There's something a from you, boundary. you want There's a something boundary from for nothing is unconditional. The reason that I will talk to the people that I am not exactly the best friends with is because I know कि maybe future में जाके I will need their help. Also it is not costing me anything to just be in Nice general to- nice to them. So why won't I be? अगर वो मेरे को pencil मांग रहे हैं तो I will be there asking me, oh what page are we on, then I will tell them what page we are on. There is no reason to be bitchy.
I didn't really like these people, these two people that I knew, and once we just kind of bumped into them at a place, and then out of nowhere they were just like, oh hi, what did you get? And I was like, talking to me? That's crazy because we have never spoken. हम लोग इतना time से we are in the same space all the time, but we don't talk to each other because we don't have the need to. And this time she talked to me, and I थोड़ा सा मेरा फसाड ऐसा निकल गया. I was like, wait, hold on. वो जो क्या glasses रहता है ना? Tainted glasses. Yeah, tinted glasses. The thing is that जो लोग hate करते हैं वो लोग बहुत confusing रहते हैं as a person because अभी hate कर रहे हैं, अभी as you said वो आके मेरे को पूछ रही है कि भाई how was your paper and all that. वो ऐसा समझ, मेरे को भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे को पता चलता है hate कर रहा हूँ and they are ignoring me and they are not talking to me. मैं बोला ठीक है ओके समझ में, फिर बाद में अचानक से they come up to me and they start having a conversation with me. Even I am confused अभी कि भाई तू तो 2 मिनट पहले मेरे को hate कर रहा था, अभी तेरे को प्यार आ रहा है मेरे पे. तो बहुत लोग ना बहुत Then that is confusing just रहते being हैं. double faced. Exactly. No, but not only that, but maybe not double face, but again, like we said, secondary information बहुत ज़्यादा है. Secondary, nobody has primary information on things nowadays. So because of that, इधर से उधर जाता है सब. ये वही, तो इसीलिए किसी ने मे बी तेरे नाम पे बिल फाड़ा, तो उसको लगा कि ये तो हो रहेगा एक थोड़ा कैरेक्टर, तो इसके मेरे को नहीं रहना, इसकी बात नहीं करना, you know. I don't want to interact with this person. Bro, I'll tell you a story. Recently I met an old friend of mine. बहुत पहले की अच्छी दोस्त थी बहुत. एंड मेरे को उसके थ्रू पता चलता है कि मेरे कॉलेज में एक लड़की है, उसकी बेस्ट फ्रेंड, वो लड़की की बेस्ट फ्रेंड मेरे बारे में जाके ये लड़की को बोल रही है, मेरे बारे में बुरा बुरा बोल रही है. And she didn't know that you all were friends. No, she knew that. Oh. उसको पता था इस, तो भी उसको जाके उससे बोला, और मेरे को मेरी फ्रेंड मेरे को आके बोल रही है. एंड आई एम लाइक भाई who the fuck is this person? Because I have never met her, I have never seen her किधर भी, and she's just hating on me for no reason. और थोड़ा gossip दे. अभी वो फ्रेंड भी है कि नहीं वो भी नहीं बोलूंगा मैं, जिसको मिला बहुत टाइम बाद. बट एनीवेज, बट मेरे को पता ही नहीं है भाई कि तुम हो कौन, तुम मेरे पे हेट कैसे कर सकते हो ऐसे ही. अब मैंने मिशन बना के रखा है फॉर कॉलेज, जैसे ही चालू ना सबसे पहले यही इन्वेस्टिगेट करने वाला मैं कॉलेज में जाके कि ये है कौन लड़की और क्यों हेट कर रही है मेरे पे. Okay, we'll have Yash Acharya episode 2 for the gossip, huh? Yep. Yeah, definitely. We need a part 2 of Yash Acharya gossip. Then there will be the BBL one. अबे वैसे Yeah, तो yeah, फिर yeah. चलेगा 2-3 घंटा चलेगा, बहुत गॉसिप्स रहते बहुत हैं मेरे gossips है पास. भाई. थोड़ा सा भाई, अच्छे से बैठ के वगैरह बात करें. मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो हूँ मैं आंटी, Off camera करते ना थोड़ा बात. मैं तो हूँ आंटी. Yeah, sure. But I feel like everyone's goal, there is way too much negative information and negativity तो बहुत है. मेरे को negativity में जाना ही नहीं है. See, it's बहुत very- easy to it's very easy to normalized. breed. वही it's very very normalized. normalized. It's very normalized now. अभी आजकल ना तू चलते फिरते रास्ते में भी तेरे को 2 लोग गाली देके जाएंगे, ऐसे क्यों देंगे, ऐसे ही देंगे गाली, ऐसे ही हेट करेंगे, समझ में नहीं आता है. But I don't get it. Like क्या मिल रहा है लोगों को वो hate अपने दिल में रख के भी. Like देख, थोड़े बहुत लोगों के लिए but ना like, it's not. नहीं, I get it. It's not fun. that. Yeah, It's fun for them. definitely. But like after a while, do you never catch yourself thinking, you know, why do I feel a certain way? Maybe I need to let go of this huge load of hating that I have. You know why? Because they've never really thought about all these things. Again, वही बोल रहा हूँ, like people don't. It's about upbringing only. ये भी upbringing की Yeah, बात है. hi. अगर तुमको बचपन से तुमको बताया नहीं गया रहेगा कि भाई you should be good to everyone, तुमको ये चीजें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बचपन से नहीं किया रहेगा तो लोग ऐसे ही टर्न आउट होते हैं. And the type of attention you get, तुम्हारा जो input रहता है वो तुम्हारा output रहता है. It's also So about like- the circle that you have around Yeah, you. You can be a 100%. nice person. You're just hanging with a group of friends and they could be the one hating on someone and you're just there. But अगर सामने वाले के लिए तो तुम भी included रहोगे ना वो circle में, तो उनको भी ये But लगेगा like कि if भाई you ये भी है. stay with them for such a time, you will turn into that person. Yeah. It 100%. does वो happen. bleed होता It है and does you don't definitely realize happen. when it happens. Yeah, Because for it's you तुम फिर भी invisible. अच्छे हो. It's like you'll randomly catch yourself one day realizing कि oh fuck मैं मैं क्या तो बन ऐसा गया बोल हूँ. रहा हूँ, मैं तो ऐसा कर रहा हूँ. मैं कभी Yeah. था ही नहीं ऐसा. You know how am I suddenly? And then ऐसा it's तू too late. सदमे में चला जाएगा. And मैं it's too बच्ची late. थी Yeah, ऐसे. it becomes too late. It's Yeah, too yeah, late. yeah. And but it's never too late to unlearn things though. हाँ. You can always take out time to unlearn things, but people don't take out the time. Because it People takes don't take out the Because a time. lot of courage. It is like It takes a they lot think to it's do that as well, embarrassing. ना. They think it's embarrassing कि like मैंने तो ये सब बोला, अभी तो मतलब कि मेरा ईगो इधर है, they know मेरा ईगो इधर है, ऑला ड्रॉप हो जाएगा. The But thing is, It's not people fucking overthink a stupid lot. though. They Yeah. They overthink a overthink lot. नहीं They रे. overthink करते रे भाई. करते हैं. Like, No, मैं I for- don't disagree with that. I don't disagree अभी with फॉर that. एग्जांपल अगर मेरे को पता है मेरे दोस्त लोग बहुत गंदे लोग हैं,
बट बाद में मैं सोचूंगा कि भाई मेरे पास तो और कोई दोस्त ही नहीं है. अगर व्हाट इफ अगर मैंने ये लोग को छोड़ दिया, ये लोग मेरे पे भी हेट करने लग जाएंगे. व्हाट इफ ये लोग मेरे बारे में बुरा बुरा बोलने लग जाएंगे, ये लोग को मेरे सीक्रेट्स पता है, सब लोग यू थिंक अबाउट इट भाई, यू ओवरथिंक. I दिस इज वन agree. थिंग. No, I agree. Yeah. People do overthink, but what I'm saying is कि कुछ तो ओवरथिंक के बारे में ही बोल रहा है. नहीं, नहीं उसके पहले कुछ people do overthink, but they don't हाँ overthink हाँ enough. नहीं for- yeah no I'm saying कि people don't take out, see people take out the time to work on themselves वगैरह. बाहर से बॉडी शेप करेंगे, अंदर से कोई कुछ नहीं करना चाहता ये है. बस ना बोलने के लिए बोलते हैं. बचपन में बस पढ़ाया था हम लोग को, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. सब लोग जज करते हैं बुक को Yeah, अपने yeah, cover से. yeah, But yeah. not going to lie, किसी but they को- have to judge the book by its cover. No, Yeah, cover. not okay. Everyone will judge a person just by looking at them. You But know that. you हाँ. can't, you shouldn't. No, you That's the have point. to, Why? because it is actually ingrained in your brain. That is how your brain works. It differentiates things. It associates It things. has been, it is up, it's It has just does been. it. It's called schema. It just judges. No, it is more of like abhi. It is majorly evolved to detect threats. Yeah, fine. So But वो then है. वो- But then that it is judging every. But sorry. I'm really sorry. Not that I have learned 2 years of psychology. Sorry, यार 20 मार्क का आंसर लिख के आई थी मैं इसमें. But not that मैंने भी नहीं पढ़ा है psychology. बोल ना आगे. हाँ, I'm the I have referee. studied. तेरा अलग मेरा अलग है. अच्छा. हाँ. जैसे अभी कि मैंने मैं 4 भी साल पढ़ता पढ़ा है हूँ. तो मैंने 4 मारपीट साल का भी पढ़ा चालू होने है. वाला है. थोड़ा टाइम में. मारपीट का भी चालू I होने strangle you, मिनट huh? हाँ, I'll also strangle you. आई विल No, बी don't. रेफरी. Wow, Okay. don't क्या हाँ, चल आगे इधर ही Equality. बात कर. मेरे को मत देना भाई, रेफरी हूं मैं. No, मतलब Disqualify मैं कर दूंगा. I'll tell you what I mean. I No, understand. I wanted to add on to your point. Okay. I didn't want to counter your point. Oh, तूने sorry. threat बोला, मैं बोला था कि वो threat भी like let's say like कैसे दूँ? How do I give an example? Okay, so should I talk? Should I elaborate? Maybe yes. Please Yeah. go ahead. So judging the book by its cover, it's very vague. Okay, it doesn't mean कि immediately judging. You know how stereotypes are. Yes. Stereotypes are a type of schema. Schema मतलब क्या रहता है? वो ना ऐसा shortcut रहता है तुम्हारे दिमाग में. So that you don't have to go through like the mental process of doing that. Now, like let's say example, I see someone wearing someone like a young girl जिसके पास tattoos है, piercing है, this है, that है. Like according to my past experiences, these are going to be like the rebellious kids. These are going to be like these rebellious teenagers. They're probably going to be It's a rude, stereotype. this and that. That's a stereotype. You don't know how they actually are. But because of your past experiences, you have categorized it. So every time you see someone who matches that, which is also there's a term for वो ही है, like it's basically like a coined thing. तो फिर तुम उनको stereotype कर लेते हो, like they are going to be like that. You don't actually know. It is just something that your brain automatically does, no matter how much you try not to. What you can do is consciously make the decision to not have negative thoughts, feelings, or actions that prove that वो गलत, वो सही है. So that is something that you do. So judging is something that you will do. Abhi, if you see, अगर as a woman, if I see just like a man who's like a taller than me, bigger than me, रात हुई है, and they're walking, I'm just automatically going to start feeling unsafe. Yeah. I don't know if that man is going to do anything or not. That is just how it would work. When you actually say judging someone by the cover, so फिर what you shouldn't do is कि you have categorized them. Now you are having those thoughts and emotions. Now you are thinking that they are the way that the stereotypes have made you think that they are. That is where you need to stop. And वो तुम्हें वो जो एक line है, a lot of people don't understand where that is. हम साइकोलॉजी Including पढ़ us. लिया भाई मैंने आज You're welcome. फर्स्ट टाइम. You learn something new every day. Yeah, you're The welcome. more you know. You can just like delve, like थोड़ा सा ऐसा swim कर लो इसके अंदर. Think about it. No, actually swim ना. स्ट्रोक्स मार. Obviously, like it showed your paddling also. करूँ क्या दस मिनट? करना. करना. दे. कर स्विमिंग कर. थोड़ा सा pan करो कैमरा guys. ऐसे स्विमिंग करता है तू? Plop 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 plop. बस plop, डूब plop, जा plop, डूब जा, आगे ऊपर आ जाओ. लाइव इधर अपना लाइफ गार्ड नहीं है भाई. जा. Thank you Yash for saving him. He's my. Now you owe him. I don't hate him anymore. That's why. Yeah. If you hate. मैं नहीं डूब. मैं बैक स्ट्रोक्स मारूंगा.
वो जो बेबीज रहते हैं ना जिनको ऐसे पानी में डालते हैं to see if they can swim or Bro, whatever, those babies are like goated, bro. yeah. भाई आई खुद वाज से वन ऑफ आते देम। बाहर। अबे क्या मैं बोल भी था रहा है, एक्चुअली, मैं मेरे मैं को कितना था कुएं में swimming- फेंका था। कुएं में What the fuck? रस्सी बांध के कुएं में फेंका था मेरे को। कुएं में कैसे फेंका इसको भाई, ये क्या टॉपिक पे आ गया है तू? Sorry, okay. स्विमिंग पे आ गया है तो साइकोलॉजी से। Yeah, all right. So, Now you can add on to my point. well, all I was trying to say is कि वो threat भी ना, I think that is also like taught, like मतलब that is acquired, not Now past experience or everything. yeah, is not past not only that, experience, no, like taught as in taught by people. Hmm. You know, like if I say people like I don't have I get what lack you're saying. the So good like, example, so matlab ki but they yeah. tell you things, you learn that you keep it in your brain, and then Yeah. that gets transferred. Yes, it also works like that. And you know start judging them a certain way Yeah. कि अरे वो ऐसे ही रहेंगे because मेरे को ऐसा बोला गया था, हाँ. you know, वैसे। Like I think it's very common. Like the easiest example to give about this is like probably racism. Hmm. That's like the best example to give here because Yeah. we have never met black people, Hmm. like people actually from Africa and stuff like that. But why do we have so many stereotypes about them already? इंडिया में तो अलग ही है ब्लैक पीपल के बारे में। अगर दिख गया कोई ब्लैक इंडिया में तो बहुत उधर भाई stereotypical things है। उसको चल उसको ऐसी चीजें बोलेंगे जो उसको समझ भी नहीं आएगा, वो ठीक है, मतलब ठीक नहीं है। नहीं ठीक है, ठीक ठीक नहीं नहीं है। है। नहीं है। We ठीक do नहीं not है। condone racism on But- this channel. सीधा हम लोगों को क्या लगता है कि भाई दे प्रॉब्ली सेलिंग ड्रग्स बिकॉज ये कौन सा ये stereotype अभी है? ये है होता Oh है my ऐसे God. बिकॉज नाइजीरियन एंड अफ्रीकन पीपल ऐसा पीपल Smuggle करते हैं यहाँ ऐसे पे। लोग ड्रग्स स्मगल करते हैं। साउथ Okay. में। तो किधर भी दिख जाए तो वो लोग को ये लगता है सबसे पहले, अभी कोई अगर गोरा आएगा ना वो लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, वो लोग को Southern नहीं होगा sides पे प्रॉब्लम, होता है smuggle उसका तो होता है। फोटो लेंगे वो लोग। हाँ। if there's a white person फोटो Yeah. लेते हैं, but अगर there's a black person coming from अफ्रीका और किधर से भी, सबसे the first thing the people of our country do is judge them। Okay. और क्या है जैसे इससे बोला अभी कि हम लोग के दिमाग में एक चीज डाल दिया है कि भाई ये लोग इसने इधर इसको पकड़ा गया था ड्रग्स बेचते हो तो ये भी ड्रग्स बेचता होगा। ऐसा इंडिया में बहुत होता है। इंडिया इज तो भाई लेट्स नॉट टॉक Let's अबाउट not इंडिया। go there. Yeah, let's not get political. So Might मेरा keep भारत this- मान। Might keep this Okay. footage or might not keep this footage. so let's end this on a good note. Yeah, I feel like the goal here is mainly कि you have to rewire yourself, your mind, your body to not actively think about negative things, not to actively hate on people. See the good in people, see the good in world. Not that you should take bad things. Of course, there तुम्हारे पास limit होनी चाहिए. You have to, put yourself, you put your foot down somewhere and tell them off. But also don't let the hate that you are receiving from people bother you as much. Because then that will also it all gets repurposed, सब ऐसा recycle होके तुम्हारे पास ही आता है। So तुम खुद का circle रखो with the people that you like. You should give love, try to receive love, and if you don't receive love, let it not affect you. आई फील लाइक कि जो हेटेड होता है ना ऐसे अचानक से नहीं आता है। देयर आर मेनी टाइम्स कि वो बिल्डअप होता है पूरा। Yeah. So the only thing I'll say is कि भाई for example if you have an argument and you start hating that person, when you have that argument जैसे दिन खत्म होता है ना, I personally do this, okay, if I have a fight with anyone, could be anyone, friend, could be my family members, relatives, anyone, it's कि तुम भाई you take a time off, थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट निकालो बस अपने रात को करो ये करना है तो, and you think about what happened, तुम एनालाइज करो कि क्या हुआ है, मैंने क्या गलती किया, बिकॉज नाउ डेज ना पीपल डोंट रियलाइज देयर मिस्टेक्स, दे वो सामने वाले पे नाम डाल देते सीधा, मतलब खुद पे तुम ये नहीं देखोगे कि मैंने क्या गलती किया इसमें। एंड अगर तुमने ऑनेस्ट स्पीकिंग तुमने अगर ये गलती तुमको रियलाइज हो जाता है ना, ये बिल्डअप होगा ही नहीं कभी, इतना हेटेड बनेगा ही नहीं किसी के लिए। और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अच्छे से लो, होपफुली इफ इट इज कंस्ट्रक्टिव, अदरवाइज जस्ट डोंट टेक इट। वो तो भाई वरना just don't But take it. people really need to start being nicer. Yeah, Genuinely, they do like, need. It is high time. Everyone is genuinely suffering from something or the other, and hating and negative feelings just multiplies it for Everyone is just so I feel burnt like- out nowadays. I feel Yeah, like yeah, कि everything, but like हम लोग को ना स्कूल में भी सिखाया था ये सब, बी नाइस ये नाइस, बट द थिंग इज कि अप्लाई ऐसा- कहीं नहीं किया। एग्जैक्टली, और टीचर्स खुद कभी कभी रूड होते, कभी कभी नहीं, बहुत टाइम Yeah. मारते थे, रूड होते थे, तो फिर बच्चा स्कूल के टाइम पे ये सब देखेगा तो यार यही सब सीखेगा ना। मैं क्लासेस गई थी मेरे फर्स्ट टाइम क्लासेस, ट्यूशंस नहीं क्लासेस, और फर्स्ट डे या फिर सेकंड डे पे द सर ओनली स्लैप्ड अ बॉय एंड आई वाज लुकिंग अराउंड लाइक दिस, इज दिस अलाउड? Why is no one saying like is this अलाउड?
I was like, एंड वो सेम सर रहेगा जो जाके बोलता रहेगा यू शुड बी काइंड टू एवरीवन, You should Yeah. respect your elders. actually he was very nice to me, so और बाकी मारते बैठो बाकी बच्चे लोग को. yeah. तो ये सब हम लोगों को जो सिखाते हैं ना ऊपर से, वो लोग में ही झोल रहे हैं भाई. अरे वो बोलते सब अलग है, करते सब Yeah, अलग है, it वही तो should- इशू it है should ना. genuinely now be started to It apply now, depends- and I depends think on the अभी upbringing as honestly, well. but also नहीं वो ठीक है, but you should need to always also unlearn things which are wrong. Yeah. Except That your is fault. that will always be an active thing that everyone needs to I do. feel like people are not ready to face the consequences. वो जब ये unlearn But करने also की they don't चीज़ें. want to उनका face कि वो ego हुआ भी है. नहीं है. You know, Exactly. ego ही है वो. उनकी ईगो से तो कुछ आता ही नहीं है. But I know think right people. now the change makers are people our age, right now. Yeah. So I think the first wave of change could be us. Yeah. So Let's. Because all I people can are- say is They have started understanding things a lot better, and I feel They're like putting yeah, in the effort yeah, too. exactly. But we'll Yeah, see how we go forward as this generation Yeah. in the next episode. but there are खत्म कर देते. Sorry, my bad. it's okay. No, you it's can fine. go on, नहीं, please ठीक है go. ठीक है, मैं भूल गया अभी पागल. टोक दिया But मेरे okay, को. my final thing would only be kinder, be nicer, and even if you hate something, try talking to yourself and or something to see if you could change that. Thank you and goodbye. Thank you. In the end, The conclusion is Open ended. कर ले.